Hey everyone, how are you all? Hello Neena ji, hello Manju ji, hey Urvi, hello Suman ji, कैसे हैं आप सब लोग? Nice to see you all. So today we're making some amazing peanut butter cookies. आज हम बहुत amazing सी peanut butter cookies की रेसिपी लेकर आए हैं आपके लिए. बहुत healthy होती है, super duper easy to put together. And like we always try and do, simplify the recipe so that it is very easy to remember also. काफी हेल्दी है क्योंकि इसमें फैट में सिर्फ पीनट बटर यूज किया है हमने, which is super healthy. Then we've used jaggery as a sweetener, which is amazing, and we've used oats as the grain or as the flour. वो भी healthy है, तो मतलब super healthy recipe है. There are no doubts about that. It is super delicious also. First thing first, are you all able to hear me? Because पिछली बार sound के काफी issues आ गए थे. तो am I audible and is my I think my table is visible. So am I audible is my question. I mean, can you all hear me well? आप सिर्फ ये कंफर्म कर दीजिए कि if you all can hear me well, right? अगर आवाज ठीक से आ रही है, I think we can begin. हम बहुत amazing homemade. Yes, audible. Lovely. Happy Guru Purnima from Uttarakhand. Thank you so much. Thank you. We'll begin with homemade peanut butter. हमने पिछले Wednesday को एक session लिया था about peanut butters, about nut butters. We took coconut butter, we took almond butter, and we covered peanut butter. तो वही जो peanut butter हमने बनाया था पिछले week, एक बोल वहीं से आया है, एक बोल हमने fresh बना लिया है. So we're using the same peanut butter that we made in the other class, 1 week old peanut butter. It is nice and great in the refrigerator. If you for some reason did not attend that session, it's available on our channel. Just type Satvik nut butters, or you can just go to our channel and down there it will be available. It's a free session. So nut butters are very, very healthy. They're a super healthy alternative of fat. आप इनको especially you can use very easily. You can use these butters very easily with breads and mostly with Western recipes. They're like easily usable. Indian recipes में भी accommodate हो जाते हैं, जैसे लड्डूज में हो जाते हैं, जैसे you can use it in few sweets, Indian sweets. But Western recipes में बहुत easily accommodate हो जाते हैं. So this is what we've picked up. So we wanted to make a cookie out of peanut butter. So peanut butter cookies are very popular, and बहुत तरीकों से बनती है. But सबसे simple जो peanut butter cookie बनती है, जिसमें peanut butter is the hero, वो बनती है peanut butter, egg and sugar. Those are the three things that they will use. But because we making here in India and we making it here at Satvik, we obviously want to make it healthier and egg free. हमने बनाया इसको eggless, और हमने इसको और healthy बनाया है by removing the white sugar, और हमने इसको और healthy बनाया by adding in some oats to it. और इस सब के बाद भी इसका taste is like just divine. मैं आपको दिखाती हूँ दो तरीके की variations की हमने रेसिपी भेजी होगी आपको. Has the recipe gone out? Yes. तो दो वेरिएशन हम आपको बताएंगे. एक का रिजल्ट है जो बहुत सॉफ्ट और मेल्ट इन द माउथ कुकी बनती है, और जो दूसरा वेरिएशन है उससे थोड़ी सी बिस्किट टाइप क्रिस्पी कुकी बनती है, क्रिस्पी ऑन द साइड, सॉफ्ट इन द सेंटर, वैसी कुकी बनती है. और एक एकदम सॉफ्ट मेल्ट इन द माउथ कुकी बनती है जो एकदम नान खटाई वाली फील देती है, बट पीनट बटर वाला नान खटाई, राइट? So one is that naan khatai feeling वाली texture वाली cookie, the other one is like a cookie, so the crispy sides and a soft center. मैं आपको एक बार top view में दिखाती हूँ दिखने में कैसे लगते हैं ये textures. Give me the top view please. And if you have any questions, you can put them right there, down there in the chat window, and we'll be taking them up also during the session. हर Wednesday को हम कोशिश करते हैं एक free session लेने की, जिसमें my always thing is कि वो जो भी हम रेसिपी कवर करें, that has to be healthy. I don't want to do any maida refined sugar recipes on a free recipe day. ये देखिए दो तरीके की कुकीज है normally. This is the fork stroke. I mean, this is how we've just made this little design using a fork, a regular fork. This is typical of a peanut butter cookie. तो ये वाली है जो structured peanut butter cookies है, जो these are like a little crispy from the bottom, so nice and crisp from the bottom like a regular cookie. Crispy
but soft from the center. Let me break one and show you. If you break, it's nice and soft from the center. That's how it is from inside, right? So this classifies as a classic cookie. और इसकी बात करें हम, जो मेरी फेवरेट पीनट बटर कुकी है, इस तरीके की होती है, you see, right? I mean, you can see the difference. इसमें भी मार्क्स वगैरह ज्यादा क्लियर हैं. स्ट्रक्चर की बात करें और लुक की बात करें, this looks better, this is more structured, this is very tasty, but this is my favorite. Why? Because of the texture, which I'll show you in a minute. Right? ये एकदम नान खटाई है, बुरबुरी, right? Super soft, super melt in the mouth, and yet very, very, very tasty, right? So these are the two textures that we'll be making today. And this is how your cookies will look like, and they will taste divine. If you like peanut butter, if you like the flavor of peanuts, you're gonna love this. All right, चलो, इसका हीरो इंग्रेडिएंट क्या है? पीनट बटर. ये मेरे पास होममेड पीनट बटर है. आप घर पे बना के इसको एक जार में डाल के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो. अगर आपको ये कुकी बनानी है तो इसको एटलीस्ट 30 minutes prior to making the cookie, bring it out of the fridge so that it comes to room temperature and it gets the right texture. रूम टेम्परेचर पे आ जाए और इसको सही टेक्सचर आ जाए, इसलिए आप इसको बनाने से पहले, बनाने से आधा घंटा पहले आप इसको फ्रिज से निकाल लीजिए. दिस इज द टेक्सचर ऑफ माय पीनट बटर. सुपर क्रीमी, सिल्की, बिल्कुल 100% होममेड पीनट बटर है, अनसॉल्टेड, अनस्वीटेड. आप चाहें तो बनाने के वक्त भी अपने पीनट बटर को स्वीटन या स्वीट या सॉल्टी बना सकते हो, पर अपना अनसॉल्टेड है, अनस्वीटन है. आप देख रहे हो टेक्सचर क्लियर है इसमें. ये मेरे पीनट बटर का टेक्सचर है, पर आपका टेक्सचर स्टोर बॉट पीनट बटर का थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो सकता है. तो जो भी पीनट बटर के टेक्सचर का डिफरेंस है ना, उसकी वजह से जो कंपोनेंट बदलेगा वो है ओट्स फ्लावर की क्वांटिटी. तो वो मैं आपको अभी डाउन द लाइन बताऊंगी कि कैसे आपको क्वांटिटी अपनी डिटरमाइन करनी है. So as we go forward, I'll tell you how to determine the quantity of the peanut butter that you will need. Right? So we'll be starting with 1/4. I'm just taking a very small recipe. This will give me around 6 to 8 cookies, depending on the size. If you make big size cookies like this, you'll get 6 of these. And if you make smaller cookies like this, yeah, so you'll get about 6-8 of them. Ma'am, only variation is milk in the other recipe. Variation is milk, a little extra of oats flour, and instead of baking powder, we're adding baking soda. तो 3 changes हैं. बेकिंग पाउडर को बेकिंग सोडा डाल रहा है, बेकिंग पाउडर हट रहा है, मिल्क ऐड हो रहा है, और ओट्स का क्वांटिटी थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है. राइट? सो अराउंड 1/4 का. So this is 1/4 cup. It will just even out. वो पीक चला जाएगा. Right? So that's a 1/4 cup peanut butter. Can we use ready-made peanut butter in the recipe? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. But ready-made peanut butter is way too expensive. Please, these are the only ingredients that we need. Right? It's a very simple cookie. This is all we need. और आप शुगर कोई सी भी यूज कर सकते हो. Somebody was asking on WhatsApp a few minutes back कि हमारे पास जैगरी पाउडर नहीं है, या शक्कर नहीं है, या ब्राउन शुगर नहीं है, तो क्या करना है? तो व्हाइट शुगर यूज करना है, पाउडर्ड व्हाइट शुगर. पाउडर्ड मिश्री नहीं है तो, है ना. अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीनट बटर से. इन गोज माय पीनट बटर. Can we use chocolate flavored peanut butter? हाँ, बिल्कुल, by all means. How to make peanut butter at home, Malti, just go. It's very easy. I mean, and last Wednesday we did a free session on making that. Just very quickly go and watch that. इसका लिंक डाल सकते हैं हम यहाँ पर. And if you could just put the link of the last free session, I'll get the link also posted here. ये देखिए, हमने peanut butter लिया. अब काफी हद तक ड्राई इंग्रेडिएंट्स डिपेंड करेंगे कि आपके पीनट बटर का क्या टेक्सचर है. मेरा पीनट बटर अच्छा सॉफ्ट फ्लोई है, तो इस हिसाब से मेरे को ड्राई इंग्रेडिएंट्स लगेंगे. बट लेट्स जस्ट सी हाउ वी गो. सब कुछ बराबर क्वांटिटी में, इट्स लाइक आई से, आई ऑलवेज लाइक टू मेक माय रेसिपी सिंपल. आप इसमें टू गेट द टिपिकल वेरी क्रिस्प इन द सेंटर एंड वेरी सॉफ्ट एंड बल्की ऑन द साइड्स पीनट बटर कुकी. आप यहाँ पे पीनट बटर की क्वांटिटी
ओट्स फ्लावर से डबल या 1.5 टाइम्स रख सकते हो, बट इक्वल रखने से बहुत मैनेजेबल सा डो बन जाता है और उससे जो रिजल्ट आता है वो काफी बेटर आता है. एग कुकीज में लूज डो चल जाता है बिकॉज एग जस्ट स्टिफन्स द कुकीज डाउन द लाइन. Egg will just set the cookies because the egg cooks and bakes and gets the structure very quickly. But because we're not adding eggs, we need to add a bit extra of flour. So यहाँ पर जितना peanut butter उतना ही flour. So it's all equal. So 1/4 cup peanut butter and 1/4 cup oats flour. This is nothing. Rolled oats ले लो या फिर instant oats ले लो और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दो. और अगर ये if your oats are a little moist, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करो और फिर ग्राइंड कर दो. इससे पहले हम so I just did a miss. पहले हम जैगरी डालेंगे और अपने वेज इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे. So I have this देसी शक्कर जैगरी का powder which I'm using. You can use whatever is easily available. You can use desi khand, you can use white sugar, powdered white sugar. You can use brown sugar, you can use anything and everything that you use, otherwise that's a sweetener. Right? Almost same amount. थोड़ा सा कम भी ले सकते हो. And now you just give it a quick mix. Spatula से हम mix कर देंगे. There is no point. You don't have to cream it or anything. All you need to do is just mix everything together. Shweta Sundara, which brand of peanut butter? Ours is our home brand. वो Satvik peanut butter. नहीं मतलब हमने घर पे बनाया है. It's homemade. Right? So I've just given it a mix so everything is come together. Now separately you can mix your oats flour and your baking powder, or you can just add everything on the go. बिल्कुल जरूरी नहीं है दो अलग बोल में करना because it's not very typical. The recipe is very forgiving, very simple. Right, but still let's because we're doing it, let's do it methodically. जितना oats सब चीजें बराबर ली. अभी तक हमने 1/4 cup peanut butter, 1/4 cup of jaggery powder, 1/4 cup of oats flour and 1/4 teaspoon of baking powder. Fill it up and level it. Now 1/4 teaspoon of baking powder. This is baking powder and not baking soda. ये baking powder है, baking soda नहीं है. चलिए हो गया. ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स दे देते हैं. Done. Hello. Gita Yadav, can we make it by Maida? If yes, then what? Yes. Same quantity. Maida, same quantity. Same quantity मैदा से बनाओ. I mean, yeah, it comes out even tastier. ये हमने डाल दिया. 1/4 cup oats है. This may be a little less or more. थोड़ा सा मैं सेव कर लेती हूँ and then I'll start to mix. अगर लगा कि ये enough है तो हम रुक जाएंगे, नहीं लगा तो हम वो वाला और डाल देंगे. Right? So I've just saved about a tablespoon और roughly remaining मैंने add कर दिया. We're just mixing everything together using a spatula. I've not put in my fingers yet. Meanwhile, I'm putting my oven to preheat 150 degrees. Toast mode. यहाँ पे दोनों rod on है. Top and bottom both rods are on toast mode. I've put my oven to preheat. Preheat पे लगा दिया मैंने अपने oven को. हाँ जी. Oven thermometer रख दो. Right. तो अपन को 150 degrees पे preheat करना है. कुछ बहुत typical है. You don't need an oven thermometer or anything. Just put your oven at 150 degrees for around 10 to 12 minutes. Let it preheat. और ये preheat होने के बाद हम इसको middle rack पे bake करेंगे. एक baking tray के अंदर parchment paper या butter paper लगाकर bake करेंगे. Middle rack पे मेरी wire rack already लगी हुई है. मेरा oven 150 पे preheat हो रहा है और ऊपर नीचे दोनों rods on है. So the top rods and the bottom rods both are on. This is toast mode wherein both the rods are on, right? So that is what you need to keep in mind. Let's just see where this is at. Pretty much there. You देखो ये it's come together, but it is very runny right now, right? It cannot be called a dough. ये thick batter की consistency पे है. तो मेरे oats के लिए और मेरे peanut butter के लिए ये combination perfect रहता है. जहाँ मैं बराबर ले लेती हूँ सारी चीज.
आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर पीनट बटर कंसिस्टेंसी और how your oats are and how your oats absorb moisture. Right, this is when I'll put my hand in and just bring everything together, and if it still does not form a dough, if it is super sticky, we will add more oats. But that's not the case. You see how it forms a nice dough. I'll just mix everything properly now. Don't really have to knead it. All you need to do is just mix everything. क्योंकि हमने वो बाद में डाले हैं oats, वो अलग से ना रहे, एकदम super soft सा आपको डो बनाना है, right? That's it. इसको डो बोल सकते हैं ना, सब कुछ साथ आ गया. That's what works. Right. चलिए, बस इसके बाद क्या है? Now this is the most easy part. Let's line both these. एक में हम दूसरे वेरिएशन की कुकीज लगा देंगे, एक में हम ये वाला कुकीज लगा देंगे. So let's just bring out a baking sheet. I got these butter papers. They are very simple, very easily available, very cheap, very not very expensive. तो मैं यहाँ पे दोनों में बटर पेपर लगा देती हूँ. कुकीज बनाते वक्त, स्पेशली ये पीनट बटर वाली कुकीज बनाते वक्त, इट्स गुड टू लाइन योर बेकिंग शीट विद बेकिंग पेपर और बटर पेपर, क्योंकि ये काफी स्टिकी होती है, रखने के टाइम पे चिपक जाएंगी. some difficulty to bring them out, and you obviously don't want that, इसलिए it's advisable. Normally मैं बाकी कुकीज में नहीं लगाती हूँ, but पीनट बटर कुकीज में लगाना ठीक रहता है. Talking of which, we've got a biscuit session coming up this Friday. That's a community cooking class, जिसमें हम 4 तरीके की healthier versions of most common, most popular biscuits बनाने वाले हैं. उसमें हम नान खटाई बनाने वाले हैं, जिसमें हम मैदा नहीं डालेंगे. नान खटाई is a late addition to the thing. We're also making, अब हमको इसकी balls लेनी है. Can we add flax eggs? We can add flax eggs. If yes, then please tell the quantity. Kanjan sari. And then if you want to add a flax egg, you just double the quantity and add 1 flax egg. इसकी quantity double करके 1 flax egg डाल दो. Flax egg to me works. I'm making 4 big size cookies here. They'll expand, right? Just have some space. Hi, Nita Bhagavath. Marti Bhatia. Oats रोस्टेड करके यूज पाउडर बनाना है क्या? अगर ओट्स आपकी क्रंची है, फ्रेश है, बिल्कुल उनमें मॉइस्चर नहीं है ना, फिर आप रोस्ट करके उसका पाउडर बना लो. लेकिन अगर आपके ओट्स if they have got some moisture because of the weather, then you make a ball of this, and when you put it down, the ball will automatically collapse, right? When you talk to your family, and I told I was making double the recipe, तो मुझे रेसिपी से 4 बड़े साइज के बिस्किट्स बन जाएंगे, राइट? आवर रेसिपी विल गिव यू 4 बिग साइज कुकीज, राइट? चलिए, नाउ आपने कुछ भी नहीं करना है, फिर से करके बता देती हूँ. आपने एक रोल करना है, just divide it into 4 parts, and when you keep it here, it will automatically just spread out because it's that loose. Now the typical look of peanut butter cookies, where you have these fork marks. Just make those fork marks, and while you make those fork marks, it will flatten out further. Because of the baking powder, this is going to rise a little bit. लेकिन इसके अंदर इतना सारा peanut butter है, ये बहुत देर तक उस राइस को नहीं रख पाएगी, and it will fall down, and which is perfect, which is what we want, right? Jaggery taste affects the cookie color and taste. So which jaggery? Subhanshi. I am it does affect the color, but this cookie is a caramel colored cookie, right? So you don't use a dark jaggery powder, use a semi-dark or a semi-light jaggery powder. This is what I'm using. I'll send you the link of the brand that I've picked it up from. मैं आपको लिंक भेज दूंगी एक, जो हमने पिक किया है. ये कलर है कैरमल कलर वाला जो जैगरी पाउडर, दैट वर्क्स बेस्ट. एकदम डार्क ब्राउन वाला भी नहीं मजा आता है, और एकदम लाइट वाला आई थिंक इज मोर शुगर देन जैगरी. So I think this just works best. This is organic jaggery powder, and I'll send you the link, Amazon link from where we've bought this. Right? This is just the अमूल बटर की रेसिपी में बेकिंग पाउडर यूज करना पड़ता है. अमूल
अमूल बटर की रेसिपी। हमने भी बेकिंग पाउडर डाला है जस्ट भी, we've added baking powder, we've added 1/4 teaspoon of baking powder here. इनो कैन बी यूज्ड ममता अग्रवाल। नहीं नहीं, इनो बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। अब अवन प्रीहीट हो गया है, मैं इसको अवन में लगा रही हूँ, तब तक हम स्टाइल नंबर 2 बना रहे हैं। प्लीज शेयर मेजरमेंट्स इन ग्राम उर्वी। Okay, we'll share measurements in grams only. Similarly, wheat flour can also be used, right? हाँ, wheat flour use कर सकते हो सोनल। The thing with wheat flour is just very heavy. Oats on the other hand are very light. So they make the cookies nice and light and cookieable. Wheat flour makes it really heavy. तो वो क्या होता है, थोड़ा सा wheat flour की quantity, this is 1/4 teaspoon. So you may call it 4 tablespoons. 4 की जगह 3 tablespoon ही डालो, 1 tablespoon मैदा डाल दो, then it balances out okay. सिर्फ wheat flour से जब ये कुकी बनाते हैं तो बटर से भी ज्यादा wheat का टेस्ट आने लगता है, बहुत लाउड, उतना मजा नहीं आता। लाइक आप ट्राई कर सकते हो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, आपको अच्छा लगता है तो आप कैरी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे करीब 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, 1/8, like absolutely not more than 1/8. This is 1/8, right? 1/8 से भी थोड़ा कम चल जाएगा, ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसका बहुत प्रोनाउंस्ड फ्लेवर आएगा। ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हो गए, इसको एक क्विक मिक्स दे देते हैं। You will need to refrigerate the dough before baking. No. You want the dough to rise and spread, and you want the cookie to be baked directly. You should not, unless you want a very firm cookie. आपको अगर इस तरीके की एकदम फर्म और प्रॉपर्ली शेप्ड कुकी चाहिए जो इधर उधर से which is not breaking on it the edges, आपको अगर ऐसी कुकी चल जाती है, then you don't have to. But a typical peanut butter cookie is a cookie with cracks on the sides, with not a definite structure. But because अपने यहाँ पर सेलेबल मार्केट में लोगों को थोड़ी सी ऐसी कुकीज ही समझ में आती है जिनका फिक्स शेप हो। अगर आपको ऐसी कुकी चाहिए with the previous recipe, then you can keep it in the fridge. But if you need a typical peanut butter cookie like with the egg cookie wala look, then you should bake it directly and not keep it in the fridge. Can we use honey instead of jaggery, Mahashri? नहीं, honey इतना नहीं यूज कर सकते कभी भी। Honey never sets something. Honey always has this tendency to soften something and not set it. So honey is mostly used when you don't want something to set. Sugar is used when you want something to set. Jaggery works as a middle ground. It sets it, but the end result is soft. अगर आप सेम कुकी शुगर से बनाओगे तो क्रिस्पी आएगी थोड़ी, जैगरी से बनाओगे तो थोड़ी सॉफ्ट आएगी, relatively soft, slightly crispy on the side, soft in the center. बट वही कुकी आप पूरी हनी से अगर बना दोगे तो वो पूरी सॉफ्ट आएगी, किधर से भी क्रिस्पी नहीं होगी, वो लाइक अ मीठी पूरी, right? So honey, you can't use just honey. Honey can be a part of the you use sugar plus honey, like a white sugar plus honey, but you can't use just honey for cookies. रोल्ड ओट्स लिए हैं या क्विकर ओट्स, क्या डिसाइड? मैंने क्विकर ओट्स लिए, रोल्ड ओट्स नहीं लिए, इंस्टेंट ओट्स लिए हैं, बिकॉज उससे रिजल्ट्स बेटर आते हैं, बिकॉज वो खाने में इट डजंट गिव अ बिटर टेस्ट। रेसिपी की बात करें, टेस्ट की बात ना करें, टेक्सचर की बात करें, तो मैंने रोल्ड ओट्स से भी बनाया और इससे भी बनाया है, टेक्सचर डजंट गेट इफेक्टेड, बट फ्लेवर टेस्ट की बात करें तो इंस्टेंट से द टेस्ट इज बेटर, सो आई हैव यूज्ड इंस्टेंट ओट्स हियर। Can we add ragi flour or jowar flour instead of oats? Yes, you can. Yes. You've got a flavor of that. You can always try any gluten-free flour here. You can also try any gluten flour here also. आप मैदा भी लगा, सारी कोई से भी फ्लावर के साथ आप ये रेसिपी ट्राई कर, तो फ्लावर की क्वांटिटी बस मैनेज करके चलना है। फ्लावर की क्वांटिटी बस इतनी लेनी है कि वो आपको हेल्प करे इन मेकिंग a reasonable dough. यहाँ पे मेरे को peanut butter चाहिए, so I'm taking this again, homemade peanut butter 1/4 cup. Question? Will brown sugar work instead of jaggery? Yes, totally. Brown sugar, 100% brown sugar work. Brown sugar will again give soft cookies like jaggery. अगर आपको ज्यादा crispy cookies पसंद है तो white sugar, brown sugar half and half कर सकते हो, या जैगरी एंड व्हाइट शुगर हाफ एंड हाफ कर सकते हो। जैगरी और ब्राउन शुगर से सॉफ्टर कुकीज बनती हैं, चूइयर कुकीज बनती हैं, और व्हाइट शुगर से क्रिस्पियर कुकीज बनती है, राइट? शुगर हैज दैट इफेक्ट ऑन कुकीज, राइट? I really like your recipes. Please tell which size of standard
cup size do you use? Mine is 200 or 240? 240. 240. Chaya, mine is 240. I think 240. Just Khyati size. My cup, 1 cup size is 240. So 1/4 cup peanut butter आ गया है यहाँ पे. 1/4 cup जैगरी डाल लेते हैं हम. ओट्स करीब 1 टेबलस्पून ज्यादा डालेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज हमें लास्ट में मिल्क डालना है. मिल्क इसको बेटर सेट करता है और शेप रिटेन करने में हेल्प करता है. तो वो मिल्क को अकोमोडेट करने के लिए 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा हमको लगेगा यहाँ पर ओट्स का फ्लावर या जो भी फ्लावर आप डाल दो. ये जैगरी आ गया. लेट्स जस्ट मिक्स ऑल ऑफ दिस. क्या थी? आई डोंट ले पीनट बटर फाइन वाला ही है या कोर्स वाला? फाइन वाले से आई एम यूजिंग फाइन पीनट बटर. दिस इज माय फाइन क्रीमी सिल्की पीनट बटर मेड एट होम. आप चंकी भी ले सकते हो. चंकी पीनट बटर लोगे तो आपको यू मे नीड लेस अमाउंट ऑफ ओट्स. आपको फ्लावर हो सकता है कम लगे, तो जस्ट पुट 3 टेबलस्पून फर्स्ट एंड देन ऐड मोर. राइट. अब इसके अंदर करीब 1/2 टेबलस्पून मिल्क हमें जरूर से डालना है, तो हम वो अभी डाल देते हैं. This is add the 1/2 tablespoon milk first and then see how much flour we need. ये करीब आधा टेबलस्पून मिल्क मैं डाल रही हूँ. सारा ये मिक्सचर डाल रही हूँ. This is baking soda and oats. करीब 15 मिनट लग जाएंगे ना हमारी कुकीज को बेक होने के लिए. बिकॉज इसमें मिल्क है, थोड़ा सा लूज रहेगा. And we'll need 1 extra tablespoon of oats. मेरी रेसिपी को लगता है आप एक बार अपनी के साथ बना के देखिए. You will know what works best for you. Is oatmeal and oats are the same, Suman? Yeah, in Indian context, they're pretty much the same. Can we use molasses? Molasses in this? If yes, please tell the quantity and please tell if we add molasses, then what the flavor come? Kanchan, you can add molasses, you can add agave, you can add any other sweetener, a healthier sweetener, but all of that will also, add to the moisture content. See, it's very very super soft. It's still not binding. तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा extra oats flour लगेगा. I'm just adding 1/2 tablespoon first. अगर और चाहिएगा तो more डाल. Will you send the recipe PDF, Mamta ji? Mamta ji has already sent the recipe PDF. I think it must be on the group. अगर आपको नहीं मिला है और आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर रहे हो, तो ये जो अपना वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आफ्टर द सेशन रेसिपी वीडियो मिल जाएगा. our recipe PDF मिल जाएगा. All our videos have the recipe PDF downloadable link in the description box. चाहे पेड क्लास हो चाहे फ्री क्लास. देखो डो बन गया अच्छा सा. राइट. इतना सा ही एक्स्ट्रा लगा. Can we use soya milk and almond milk? हाँ बिल्कुल. Coconut milk. Any. Yes. You Right. can use any milk. You can even use water. Even water भी use कर सकते हो आप. Right. So this is a perfect texture. A perfect cookie texture has been achieved, and that's what we want. So let's just make 4 cookies out of it. That's it. इतनी simple है peanut butter cookies. और बहुत टेस्टी है. Like they're super tasteful. Can you tell me some more details about cookie class? Khyati जैसा. Khyati, the cookie class is we're doing like I said, हम नान कटाई बना रहे हैं. हम जीरा अजवाइन बिस्किट बना रहे हैं. उसके अंदर हम बिना मैदे का कोकोनट बिस्किट. सारी रेसिपीज are without मैदा. हम बिना मैदे की कोकोनट we're also making a coconut biscuit without maida, and we're making an almond oats cookie without maida again. तो ये 4 तरीके के बिस्किट्स बनाएंगे. It's a community cooking class, and community cooking classes basically have been started with the aim that we get people to come together. So sorry, I think that's good luck. Huh? So community cooking classes have been started with the intention कि होता क्या है, हम लोग क्लासेस ले लेते हैं, हमें कुकीज बनाना भी आता है. at times हम बेक करके सेल भी करते हैं, बट जब घर के लिए बनाने की बात आती है, when it comes when it gets about cooking it for the family and making sure that you don't buy from outside, we somehow just get easy. हम थोड़ा सा lightly ले लेते हैं और हम नहीं करते वो effort. So this our idea is to कि हम सब साथ में मिलके बनाएं ताकि आप भी motivated रहो, and you end up making great things at home for your family, and you start to avoid eating outside
things which are full of preservatives. जैसे कि ना चाय के साथ या everyone any time of the day at least कोई ना कोई हमारी फैमिली में हम या कोई और बिस्किट जरूर खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट. बट अपन इजीली बहुत टेस्टी बिस्किट घर पे भी बना सकते हैं. But it's like it's very difficult to get out of the shell and continuously stay motivated कि हम बाहर का पैकेट लाएंगे ही नहीं. If you go and read any packet behind, you will see it has added color, preservative and added chemicals for flavor. ये 3 चीजें हैं जो अपनी बॉडीज की इम्यूनिटी को बहुत कम कर रही है. आप भले घर पे मैदा खाओ, लेकिन अगर घर का खा रहे हो, राइट जगह से लेकर खा रहे हो और उसकी कुछ कुकी बना के भी खा रहे हो ना, वो इतना नुकसान नहीं देगी जितनी एक मल्टीग्रेन बिस्किट नुकसान करेगा जो आपने पैकेट का खरीदा है, जो मशीन से बना है और जो एक पैकेट में है और जो 6 महीने खराब नहीं हो रहा है. So we all need to understand that eating packaged food is absolutely harmful. वो इतना ही harmful है जितना other harmful bad habits are. So our effort here is to try and minimize use of packaged food. हम चाहते हैं कि हम सब साथ में आए, क्योंकि क्या होता है कभी अकेले मोटिवेटेड नहीं रहते ना, जैसे मैंने बताया. तो जब लेकिन when we are together, you feel like doing it, right? It's like जब आप कहीं if you decided कि मैं जिम जाऊंगी for example, right? But you doing it alone, आप आधे दिन जाते हो आधे दिन नहीं जाते हो. But if you got a group of friends और आप सब साथ में जाते हो तो आप हर बार जाते हो, right? I can smell the peanut butter. The cookies are not done yet. आपको पीनट बटर कुकीज को बहुत लंबी देर किसी भी हालत में बेक नहीं करना है. If you end up over baking them, the peanuts inside will become really bitter. आप अभी जब देखोगे इसको, when I bring it out, it will not even be this golden color. जब मैं इसको बाहर निकालूंगा वो इतनी गोल्डन भी नहीं होगी, लेकिन हम बाहर निकाल देंगे धीरे धीरे the peanuts retain heat for very long. वो gradually color भी dark हो जाएगा, उसका texture भी stiff हो जाएगा. But you just have to bring them out while they are very soft, exactly like नान खटाई. तो 15 मिनट के आसपास हो जाता है मेरे ओवन में. आप फर्स्ट टाइम 15 मिनट्स में निकाल के देखो. See if it is this dry, the milk one, it means you need to add a bit more of liquid. So here, if you want more flavor and more fat, you can add peanut butter or you can add a bit more of milk. तो ये देखकर ही होगा, आपके ओट्स फ्लावर पे डिपेंड करता है. मैं थोड़ा सा यहाँ पे आधा टीस्पून जितना मैंने मिल्क डाला, मैं इसको फिर से मिक्स कर. ये ड्राई आउट हो गया, ओट्स ने बहुत मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया, राइट. तो वी जस्ट हैड अ फ्रेश पैकेट ऑफ ओट्स ग्राउंड. सेम ब्रांड का फ्रेश पैकेट भी आप कभी ग्राइंड करते हो ना, उसमें भी आपके टेक्सचर में चेंजेस आ जाते हैं. तो यू जस्ट हैव टू बी वॉचफुल ऑफ द टेक्सचर. आप थोड़ा सा टेक्सचर देखो, मैं 1 टीस्पून और डाल रही हूँ मिल्क, एंड आई थिंक इट शुड बी फाइन, राइट. क्रंची पीनट बटर को ग्राइंड करके ये भी यूज कर सकते हो, बना सकते हैं. बिल्कुल 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 कर सकते हो अलका जी. जस्ट मेक श्योर यू डूइंग इट एट द पल्स मोड. यू डोंट कीप ग्राइंडिंग इट फॉर लाइक 3 लॉन्ग मिनट्स. 20 सेकंड से लंबी पल्स मत लो, अदरवाइज क्या होता है कई बार पीनट बटर के ऑयल सेपरेट हो जाते हैं और उसका सॉलिड अलग हो जाता है. यू डोंट वांट दैट. प्लीज मेक श्योर. ये मैंने फिर से बाइंड करा है क्योंकि मेरे बहुत क्रैक्स आ रहे थे. There was the dough was dry, so I've done it. I've just added 1.5 teaspoon of milk. तो करीब 1.5 पहले डाला था, half tablespoon is 1.5 teaspoon, तो total 1 tablespoon milk डल गया. Please share the details of Friday cookies class with cooking. Yeah, अभी आपके ग्रुप पे हम भेज देंगे in a while. Also, this is a part of community cooking. और जैसे मैंने कहा, community cooking is not a one-off class. Community cooking is an idea, जहाँ पे हम साथ में बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं मोटिवेटेड रहने में. और जब हम साथ में बनाते हैं, हमें मजा आता है, तो ये चीजें हमारी हैबिट बन जाती है. Once they become our habit, we then don't want to buy market stuff, क्योंकि टेस्ट फ्रेश चीजों का अच्छा होता ही होता है और फैमिली भी धीरे धीरे टेस्ट डेवलप कर लेती है, राइट. So the community cooking classes are an initiative where we want to change the way we eat. We want to change. I can smell the peanut butter being roasted. So I think it's time I bring these out. Let's just see. If you think you can turn your tray around halfway through. मैं भी दिखाती हूँ कैसी हो गई है. They've swollen a little, they've spread a little, but they're still not done, right?
एजेस देखकर पता चलेगा हो गई है, और दूसरा आपको खुशबू से पता चलेगा, जब पीनट की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आने लगे देन यू डन। Any substitute of peanut butter here, Aditi? Aditi, this is a peanut butter cookie session, but you can try with other nut butters as well. But जो peanut butter जिस तरह से bind होके cook होके change करता है अपना texture, वैसे ना तो almond butter करता है ना coconut. I don't know if any other butter can do this. Peanut butter I would say is not replaceable. This is the peanut butter, right? ये हमने रेडी कर दिया, इसको भी मैं ऑन द साइड लगा दे रही हूँ. My oven has space for one more tray, so I'll just put this also in. When you bring this out, it will be very very soft. आपको लगेगा ही नहीं कि it will come out ever. Just stay at it. इसको उठा के आपको वायर रैक पे भी नहीं रखना है, इसको आपको बेकिंग पेपर पे ही cool down होने देना है. So I'm just putting the oven again for 15 minutes. My previous batch will be done in 2-3 minutes, and the other batch will take 15-17 minutes to be done. Right, I am happy to take questions. Can we add a little bit of cocoa powder and coffee so that it will be more flavorful? If yes, then please mention the measurement also. आप cocoa powder डाल सकते हो, around 2 teaspoons. 2 teaspoons oats हटा दो और 2 teaspoons cocoa powder डाल दो. That just works great. Coffee अगर आपको डालनी है तो इंस्टेंट कॉफी का थोड़ी सी मिल्क में मिक्स करके अपनी मिल्क वाली रेसिपी में डाल सकते हो. Just mix the instant coffee in milk and then add it. You can add around half teaspoon of instant coffee in this recipe. Please mention the size of cup, ma'am. Gayatri. Gayatri, my cup size is 240 ml. Thanks for the responding, ma'am. Please explain about molasses. Molasses quantity used is replace jaggery, or we add little quantity of molasses with jaggery. No, you can replace. You can use completely molasses without and remove jaggery. You can totally use molasses and get rid of jaggery. You may have to add extra oats flour. That's the only thing, and that you will have to judge depending on how the texture of the dough is coming out. Right? इसके अलावा कोई change नहीं है. आप पूरा jaggery को molasses से replace कर सकते हैं. Again be ready for a softer cookie. वाली cookies कौन सी बनाई है? मैंने got lost in question and answer सोनल हमने ये भी peanut butter cookies बनाई है. The only thing is हमने जो peanut butter cookies पहले बनाई थी वो they used no milk, so they are more soft, and they use some baking powder. The other one have used a little bit of baking soda, and they've used some milk, so these cookies are more stable. These cookies are a little a little light. They are a little fluffier than the previous cookies. The previous cookies are dense and melt in the mouth. The second variation is light, a little lighter, and it has more bite to it. Like जैसे cookie होती है, sides crispy और center soft. ऐसी निकल के आएगा इनके साथ. Question then? अपने उन्हें अपडेट होते हैं यहाँ पर questions. ओके, आप कंटिन्यू देखते हो तब होता है. Gayatri, awesome explanation, ma'am. Can we use creamy? I don't know which brand you're talking about. Creamy peanut butter ही मैंने use किया है. Fine peanut butter. Take pick a peanut butter bottle जिसका ingredient सिर्फ peanut butter, जिसमें कुछ और नहीं हो, right? Just peanut butter. In your paid classes, there is no chocolate chip cookie as बच्चों की favorite होती है. So अरे हाँ, I think that's a good point, Khyati. Let me see if we can add to one of the variations. Please share the brand of jaggery powder you are using. Yes, I will. It's not done yet. Got it. Thanks a ton for another. Ma'am, let's say के साथ same quantity में baking soda and baking powder use होगा culture side. नहीं, flax egg डालो, baking soda, baking powder दोनों हटा दो. No leavening agent is needed. Flax egg will do the bit, but flax egg इसमें बहुत ज़्यादा leavening की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि peanut butter, butter does the magic. जैसे अपन सिर्फ plain butter cookies बनाते हैं, अपन उसमें कोई baking soda, baking powder नहीं डालते. Butter is the magic ingredient. Butter ही उसको soft बनाता है, butter ही उसको light बनाता है.
यहाँ पे peanut butter is the magic ingredient. It does everything, but you need a little bit of it because you're not using maida and you're using oats flour, for example. अगर आप मैदा यूज करोगे तो आपको बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हटा सकते हो. So similarly, what was the question? I totally got lost. बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर यूज होगा. अगर फ्लैक्स सीड डाल रहे हो तो आपको भी जरूरत नहीं है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की, because it's not a big thing here. Sonal Mehta, Ani, wishing you a very happy Guru Purnima. You are our baking guru. Thank you so much, Sonal. You all are my gurus. I think every class I learn and go back. So there is no class where I have just shared my knowledge. I've always ended up getting some knowledge. So I think everyone watching there, here is Ani wishing you all a happy Guru Purnima, because you all have taught me something or the other, and I am who I am because I've been working with you all. Thank you so much. ख्याति देसाई, दोनों का डो एक साथ बना के बेक कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल, एक साथ बना दो और एक साथ लगा दो, बहुत आराम से कर सकते हो. जो अपना मिल्क वाला है उसका बेकिंग टाइम 3-4 मिनट ज्यादा होगा, और जो अपनी बिना मिल्क की कुकी है वो रिलेटिवली जल्दी बन जाएगी. दैट्स द ओनली डिफरेंस. मोलेसिस क्या होता है मैम ख्याति देसाई? It is a form of liquid. It's a liquid sweetener which is natural. It's more natural. It's very frequently used in Western baking. People there use it. It is their native ingredient. अपना native jaggery है. तो मैं हमेशा यही बोलूंगी सबसे कि आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए वही अच्छा होता है जो आपका लोकल इंग्रेडिएंट होता है. तो आई थिंक जैगरी इज लोकल टू ईच वन ऑफ अस. हर कंट्री के हर पार्ट में कोई ना कोई तरह की जैगरी पॉपुलर है. हमारे यहाँ शुगर केन जैगरी, आई थिंक देयर इज पाम जैगरी, देयर इज कोकोनट जैगरी. एनी फॉर्म ऑफ जैगरी इज ग्रेट. And try and use local ingredients because your body is fit for that. That just works better for you, unless there's a client requirement or unless you need to use an ingredient for any other reason. Particularly, try and pick up local ingredients. They are healthier, they're better for the body, they're less expensive, and they are absolutely tastier. Yes, happy Guru Purnima. Happy this night. Thank you, Kathy. I have inbuilt oven large size. Can I keep 2 to 3 trays upper? Oh, absolutely. Very forgiving. In one go. ऊपर नीचे रखो, लेकिन जो भी अगर आपके पास बड़ा ओवन है ना तो सिर्फ टॉप की रैक और नीचे की रैक छोड़ देना. राइट. सो डोंट पुट इट वेरी क्लोज टू द रॉड, बिकॉज़ पीनट बटर के अंदर का जो पीनट होता है, अगर आपने चंकी ले लिया थोड़े बाद भी बाइट्स है ना, दैट बर्न्स वेरी क्विकली. सो जस्ट कीप इट अ लिटिल अवे फ्रॉम द रॉड. यू कैन यूज ऑल द रैक्स एक्सेप्ट फॉर द रैक क्लोजेस्ट टू द लोअर और क्लोजेस्ट टू द टॉप रॉड. फिर आप उसको चेंज करते रहना है ना. आफ्टर 10 मिनट्स जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ योर ट्रे. आप सेकंड फ्रॉम द बॉटम वाले को निकाल के सेकंड फ्रॉम द टॉप पे लगा दो. ऐसे करके वेरिएशन करोगे तो आपकी अच्छे से बेक होकर निकल आएगी. The cookies are done. The other one. Save the time and electricity. Yeah, absolutely. You must do that. Cookies are very forgiving. आराम से एक साथ काफी सारी बेक हो जाती है. Ma'am, somehow my cookies never came out as desired. Don't know why. Dipika, yaar, ये नहीं होना चाहिए. You need to message me separately. Let's figure out what's going on. Your cookies have to be good. Dipika will fix your cookies. देखो ये क्या कलर का निकल कर आती है और धीरे-धीरे कैसी हो जाएगी. You know, just keep it up. Can we make also wheat peanut butter cookies? Mukta Goel. Yes, Mukta, you can. See, this is how it looks like right now. You will feel कि अभी तो आटा ही पड़ा है, डो ही पड़ा है, but ऐसा नहीं है. 15 से 17 मिनट में हो जाती है. आप थोड़ा सा एज देख लो, just pick it up like this, and if you feel it's done from the edge, just stop. Because ये वाली बहुत ब्रिटल है, जिसमें बिल्कुल मिल्क नहीं डाला, इसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट कुकी होती है. मिल्क डालने से थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो लेकिन ये एंड रिजल्ट में ऐसी हो जाएगी. Just let it sit outside on the tray. It will still keep cooking. If your oven is hot, put the tray on the oven. है ना. मैं क्या करती हूँ, इसको निकाल देती हूँ, उसके बाद ट्रे को ओवन पे छोड़ देती हूँ. धीरे 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 ये कूल डाउन होती है. 20 मिनट पे कूल्स डाउन इन अबाउट 20 minutes, and the color intensifies in like 30-40 minutes. Automatically color भी डार्क हो जाता है, टेक्सचर भी बेटर हो जाता है. Just in case after half an hour, 40 minutes, you realize this is underbaked. आपको कुछ नहीं करना है, ट्रे को उठा के वापस लगा देना. मैं कुछ बोल रही थी. आपको कुकीज अगर आपने रियलाइज किया कि अंडर बेक्ड है, तो आप उस ट्रे को वापस से ओवन में लगा सकते हो. प्रीहीट योर ओवन
and in a preheated oven, put it back, bake it for another 4-5 minutes. Just in case your oven is different, it didn't heat enough, whatever reason, you know, every oven is different. कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी कुकीज अभी बेक नहीं है completely, आपको पता भी नहीं चलेगा, अभी देख के बिल्कुल नहीं लगेगा ये डन है, but you have to go by what I'm saying. Yeah, just take a break. You know, an undercooked cookie can be covered up for, but an overbaked cookie will become really dark and bitter and not usable. यहाँ पे रुक जाओ, चेक करो आधे पौने घंटे के अंदर अगर ये क्रिस्पी नहीं होती, you know, it doesn't solidifies, it will be very soft. Just remember that, right? It doesn't, you know, it tastes underbaked, then you can bake it again. What's your question? What is flax egg, Sonal Mehta? Sonal flax egg is, you know, one. So you take 1 tablespoon of ground flax seeds. Flax seeds लेना है, उसको dry roast करना है, उसके बाद उसको grind कर लेना है. वो जो ground mixture है flax seeds का 1 tablespoon लेंगे, उसके अंदर 3 tablespoon पानी मिलाएंगे, बहुत जोर से उसको mix कर देंगे, 10 मिनट के लिए रख देंगे. ये जो बन के आएगा mixture, slimy सा एक mixture होगा, उसे बोलते हैं flax egg. Can Quaker oats be powdered and used? Right away. Quaker oats का पैकेट लो, अगर वो फ्रेश पैकेट ओपन कर रहे हो तो बिल्कुल वो ड्राई होते हैं, उनको डायरेक्टली मिक्सर में चला लो, आपका ओट्स फ्लावर बन गया. ज्यादा कुछ नहीं करना, स्पेशली कुकीज. अगर आपको लगता है क्विकर ओट्स का पैकेट आपके पास किसी डब्बे में पड़ा है, थोड़ा सा यू नो सीम गया या इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर, then you can dry roast it for like 3 minutes, 2 minutes on a very low flame. जैसे ही फ्रेग्रेंस आती है ओट्स की, वैसे आप टर्न ऑफ कर दो अपनी फ्लेम को, ठंडा करो और ग्राइंड कर दो, then that's your oats flour. Viscose substance made from sugar cane or beet sugar molasses. Sorry. She's telling what molasses is, Yes. right? Okay. Thank you, Swati. अवन की ब्लैक वाले ट्रे में बना सकते हैं, साथी साथी बिल्कुल बना सकते हैं. just make sure you have a butter paper. कुछ नहीं है बटर पेपर वगैरह घर पे तो फॉइल पेपर लगा दो, लेकिन लगाना है, डायरेक्टली नहीं रखना है, स्टिकी हो जाता है. दोनों डो को एक साथ बनाए तो पहले वाला फ्रीज में रखना है क्या? हाँ, जब तक आपका दूसरा बना रहे हो और बड़ा बैच बना रहे हो तो फ्रिज में रख सकते हो. Not like mandatory. Sorry. Please share the role of baking powder and baking soda in cookies. It is seriously science to understand. I'll just repeat. This is my favorite question, and I have many people who've been working with me on cookies who've come again for today's class. I would love if any one of them remembers and it can answer this to me. Baking soda और baking powder cookies में क्या करते हैं, क्या रोल होता है उनका? अगर आपको ध्यान है तो आप प्लीज बताओ, और अगर नहीं ध्यान है तो फिर मैं बताऊंगी. So give me a Guru Purnima gift, right? This is very tasty. This is very filling also. अभी किसी दिन ना मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिले, it's like a perfect breakfast cookie. 2 cookies with a glass of milk is like a complete breakfast. It keeps you full for very very long and it is very tasty. Gratitude and regards on Guru Purnima. Swati Rajendra Chittam. Thank you, Swati. Pune. Mumbai. ओवर की ब्लैक वाली ट्रे में बना सकते हैं क्या? अवन की ब्लैक वाली ट्रे बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, बस बेकिंग पेपर लगा दो. सुभांशी, माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड, हाउ मच टाइम इट विल टेक? माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में 15 मिनट में बन जाएगा. 15 मिनट से जल्दी भी बन सकता है. 14 मिनट्स, चेक ऑन 14 मिनट्स. मैम, ग्लूटेन फ्री ओट्स का भी सेम टेक्सचर हो आएगा कंसंसरी? ग्लूटेन फ्री कुकीज का भी सेम टेक्सचर आएगा. डिपेंड करता है आपने कौन सा फ्लावर लिया. ओट्स काफी लाइट होते हैं, उनका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है. डिपेंडिंग ऑन व्हाट फ्लावर यू टेकन अप, द टेक्सचर मे और मे नॉट बी एज गुड. अगर आप चाहते हो जो पहली वाली रेसिपी है वो भी आपकी थोड़ी और स्टेबल आए स्ट्रक्चर में, मतलब जो आप टच करो इमीडिएटली ब्रेक नहीं हो जाए, बिकॉज आप अगर सेल करने के लिए बनाओगे तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द कुकी टू रिटेन इट्स स्ट्रक्चर. आप यू नो लाइक द टाइनीएस्ट पिंच इसके अंदर ज़ैंथेगम डाल सकते हो, जैसे सारे ग्लूटेन फ्री आप बेकिंग में डालते होगे. एक पिंच ज़ैंथेगम डालने से क्या जस्ट बाइंड्स बेटर, इट डजंट ब्रेक अपार्ट. I am asking about gluten-free oats. You're asking about gluten-free oats, yeah, similar texture आ जाएगा, but all I'm saying is just add a very little pinch of xanthan that will make sure it doesn't fall apart. Safola oats ले सकते हैं क्या? सफोला के प्लेन ओट्स अगर कोई आते हैं तो आप ले सकते हो. मसाला ओट्स वाले ओट्स मुझे नहीं पता कैसे होते हैं टेक्सचर में, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, so I can't comment on that.
Please tell baking of cookies should be done at which mode and both rods with fan or without fan. Both rods without fan. Both rods without fan, because a fan here tends to dry out the oats a lot, and it also tends to give more temperature than needed. ये cookies थोड़ी ज़्यादा temperature पे अगर हम बनाते हैं तो peanut butter काफी bitter हो जाता है, तो इसलिए no fan यहाँ. Baking powder will rise the cookies and baking soda will expand the cookies. Hope I'm right, Sonal Mehta. Yes, Sonal, you're right. Thank you so much. Deepika. Soda, baking और क्या? Soda. Deepika ने पहले लिखा था baking powder spread. Sorry. Aditi, right? Soda spread, powder puffs. Right, Aditi, that's right. Lataji, that's absolutely correct. Cookie will spread with baking soda and will puff up with baking powder. Simple logic है. फिर से याद रखते हैं. Soda spreads, powder puffs. Soda spreads, powder puffs. Simple logic. Whenever you want a puff, add baking powder. Because ये वाली cookie dense बनती है जो हमने पहले वाली बनाई. हम चाहते हैं थोड़ा सा उसमें height आ जाए, तो हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं. बाद वाली जो कुकी है उसमें मिल्क और पीनट बटर की कॉम्बिनेशन की वजह से वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा राइज कर जाती है, तो वहां पे सोडा डालते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाए और थोड़ी सी बड़े साइज की अच्छी सी कुकी बने. लता, योगेश, अदिति, दीपिका, एवरीबॉडी आंसर राइट. पफ एंड स्प्रेड. थैंक यू सो मच. कुछ लोग सुनते हैं मेरी बात. Baking soda gets activated when combined with water and acidic medium. Swati ma'am. This is which is right, and it gets activated when combined with any acidic medium. But as far as the cookies are concerned, any liquid medium helps the soda to work. And the idea of soda is it just make sure that you get a bigger cookie, a little bigger, spread out cookie. और बेकिंग पाउडर ये इंश्योर करता है कि आपको एक अच्छा पफ मिले. तो होल व्हीट वाली जो रेसिपीज रहती है ना, ज्यादातर मैदे की जो कुकीज होती है ना, मोस्टली वो ऑटो स्प्रेड हो जाते हैं बिकॉज मैदा इज रियली लाइट. वहां पे आपको बेकिंग सोडा इज नॉट रियली यूज्ड. बेकिंग पाउडर इज यूज्ड एट टाइम डिपेंडिंग ऑन द अदर इंग्रेडिएंट्स दैट यू पुट इन. होल व्हीट की कुकीज में अगर आप दोनों डालते हो बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, तो कॉम्बिनेशन गिव्स अ बेटर टेक्सचर because whole wheat cookies are mostly dense, right? So when we go out and we try and make a coconut cookie which is otherwise really nice, light and light, airy, उसको जब आप whole wheat डालते हो तो वहां पे दोनों ही चीजें आपको डालनी पड़ जाती है to get the right texture. So it's cookie dependent, it is ingredient dependent कि आपको क्या डालना है, and it is your texture demand also. End result आपको कैसा चाहिए वो भी important है. बस I think we done. My oven doesn't have option for no fan, Natalie. No fan का आपके पास ऑप्शन नहीं, आप कम से कम 10 डिग्री कम रखो. 140 पे करना लगता है. If you don't have an option to go without fan, just keep the temperature at 140. Don't go beyond that because fan just distributes the heat so well that the temperature, overall experience of the cookie is a higher temperature than the actual temperature that is set on the oven. ये हमारी देखो कितनी अच्छे से सेट हो गई. अभी अपने को कितनी लाइट लग रही थी, ऑलरेडी डार्कन हो गई. इसको मैं ओवन के ऊपर रख दूंगी, थोड़ी बहुत रेसिडुअल हीट है उसको और गर्म हो जाएगा. Can we make also wheat peanut butter cookies मुक्ता हुआ है? हाँ बिल्कुल बना सकते हो मुक्ता. Just start with 3 tablespoons of wheat in our recipe. Then you can add more if needed. Depends on the wheat flour that you're using. That's it. So I think we finished up all the questions. Let's just see how this has come out, and let's just see where this is at. ये बन रही है बहुत अच्छे से. See the combination of milk with peanut butter, what it does is it gives an automatic rise to it. वहाँ पे बेकिंग पाउडर बिल्कुल मत डालना. मैं आपको दिखाती हूँ. हमने बेकिंग पाउडर नहीं डाला, फिर कुकी में एक बहुत अच्छा राइस आ गया है already, and it has spread out also. It's a big cookie, and I'll show it to you in a minute. And then but it'll take another 5 minutes to bake, and we'll bring it out and send you pictures later. Does baking soda or baking powder makes softer cookies? छाया. हाँ मोस्टली कुकीज लाइटर बना देता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर. आपको हमेशा एक डेंस कुकी नहीं चाहिए होती है, राइट? डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट्स एंड द टेक्सचर दैट यू वांट. कुकीज आर नॉर्मली लाइट एट सम पॉइंट, राइट? कोई सेंटर से सॉफ्ट और थोड़ी सी लाइट होती है, कोई पूरी ऊपर से नीचे तक लाइट होती है. तो डिपेंडिंग ऑन द एंड टेक्सचर नीडेड अब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर ऐड करो तो टॉप में वापस जाएगा. सी you see इतनी बड़ी साइज की कुकीज बन रही है. बिग ट्रे
and it's pretty full and it's spread out well and it's also risen. थोड़ा सा height भी आ गया है बिना baking powder के. That's because of the combination, right? So I'll just send this in again. And it'll take another 4-5 minutes to be done. Can I get some from that side? Yes, yes, Sandy. Thank you. See? Together, it's not falling apart. ये जो हमने पहली कुकी बनाई थी वो है. The color will deepen, it will darken. Just stay on it. आपके ओट्स जितने फाइन होंगे ना, ये मेरे पहले बैच के ओट्स हैं. आपके ओट्स और आपका पीनट बटर जितना फाइन होगा ना, ये टेक्सचर उतना फाइन आएगा. देखो ये क्रम्बली सा रस्टिक सा आया है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है. बट अगर आपको फाइन चाहिए तो मेक श्योर योर ओट्स आर फाइन एंड योर पीनट बटर इज फाइन. दोनों चीजें जब फाइन होंगी तो टेक्सचर और इवन आएगा, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ चेंज यू कैन मेक टू गेट फाइनर कुकीज. ये हमारा पहला वाला बैच है जो अभी ठंडा हो रहा है. जब तक ये पूरा ठंडा नहीं होगा, मैं एक उठा के दिखाती हूँ, टूट जाएगा, घबराना मत. Try and pick it up like this. You can get it out, but it will break like this. Which one? पूरा crumble हो जाएगा. But that is because you touched it while it is still hot. 15 minutes and you will be done at 150. Right? तो हम यहाँ रख देते हैं, लड्डू बना लेंगे, इसकी एनर्जी बाइट बन जाएगी छोटी छोटी. And this we keeping on the oven. I'll just let it cool down completely. Won't pick up a hot cookie. Chaya, which one makes softer cookies, baking soda or powder? Softer cookies is just softness. Cookies की हमेशा fat से आती है. Baking soda और baking powder दोनों leavening agents हैं. They leaven the cookie. They leaven the cookie. Leavening is either sideways or top face. वो cookie को light, spread out, bulky, हर तरह की चीज बनाते हैं. They make it light. They can make it lighter. They can add air to the cookie, but they don't make the cookie softer. अब air वाली cookie को आप कम देर bake करोगे तो end result soft हो जाएगा. But ultimate idea of baking soda and baking powder is not to soften the cookie. It is to lighten the cookie. And butter is the ingredient. Any fat is the ingredient that will make the cookie soft. Ma'am, which food processor peanut butter कैसे बना सकते हैं? Without food processor. Without food processor मिक्सर में बनता है. हमने अपने वंडर शेफ के बुलेट जार में बना के लाइव दिखाया था पिछली बार. लास्ट वेडनेसडे. You the session must be like that. Have you sent it on the chat? Yes, nut butter का WhatsApp ग्रुप में भेजा. नट बटर का लिंक WhatsApp ग्रुप में भेज दिया गया है. आप वो देख लो. हमने लाइव नट बटर पीनट बटर बना के दिखाया है ना. It's very easy and it can be made in a home mixer. You just have to have good quality peanuts and you have to have a lot of patience. बस यही लगता है उसमें 2 ingredient. One ingredient, but the other ingredient is a very local ingredient which you'll have to just develop. That's a lot of patience. Cookies upcoming class details, some sweets and some savory, all without maida, Aditi. All are without maida, Aditi. And we've got jeera ajwain, which is semi-sweet savory. And then we've got naan khatai, which is sweet. Then we've got almond oats, which is again sweet. It's got some honey also in it. And then we've got, which was the fourth cookie, coconut. It's again sweet. So it's more sweet than savory. 1 savory, semi-savory, and 3 sweet. It's like a proper tea type cookie. Savory cookies bhi kabhi karenge apan completely. Looks so yummy, Seema soup. This is very yummy. This is so tempting that you can have it on a full stomach. आप इसको ऐसे dessert खा सकते हो. जैसे खाने के बाद half a cookie is amazing. Like it's one of the most healthy dessert you can have. शाम को ले सकते हो. It's great in protein. Like nuts में peanut is the vegetarian sources of protein. But peanut is the it tops the chart. Like it's right on there. तो आप हम वेजिटेरियंस का बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है. तो आप ये अदरवाइज भी खा सकते हो. और इतना सब नहीं करने का मन है तो खाली पीनट्स को खा ही लेना. देयर ऑल्सो अमेजिंग. Which oven would you recommend to bake 2 trays at a time? Seema ji, when you can bake 2 trays. एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए ना तो 40-45 लीटर में भी 2 ट्रे आराम से आप बेक कर सकते हो. मैं यूजुअली कभी भी कुकीज मटरी वगैरह अपने ओवन में बेक करती हूँ. मैं 2 से 3 ट्रे लगाती हूँ बिकॉज इतने बैचेस कौन एक एक करके बनाएगा.
But you just have to be hands on with your oven. आपको अपने oven के बारे में बस पता चल जाता है कि मेरे oven में 10 मिनट बाद I just have to change the level of the tray and I just have to exchange. You just get to know. I mean 45 liters is also great for baking several trays, 3 trays at a time. Thanks a lot, ma'am, for sharing great recipe Chaya Gupta. Thank you, Chaya. Thank you so much, everyone, for joining me. भेज दो प्लीज, इतनी यम कुकीज चाय मैं बना लूंगी, कोई हमें बनाकर नहीं खिलाता मैम. दीपिका मैं तुम तो एक बार आओ यार. You need to come over. We'll have हम चाय भी हम बनाएंगे, कुकी भी हम बनाएंगे. तुम तो बिल्कुल पड़ोसी हो हमारे, right? Delhi is absolutely close by. 3 hours. ये जो रेसिपी है ना, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी एनर्जी बाइट भी बनाता है. We did take the class on energy bright previously, it was a paid class, but otherwise also this recipe without you doing anything, oats को थोड़ा सा grind, थोड़ा सा roast कर लो और उन oats को combine करो grind करके, और ये बहुत amazing सी एनर्जी बाइट्स बन जाती है, right? अभी तो इसमें कोई भी ऐसे कंपोनेंट नहीं है जिसको आपको बहुत पकाना है इन दी ओवन. आप इसको इतनी देर ओवन में रख रहे हो कि आपको चीजों को कंबाइन करके कुकी शेप देनी है, राइट? अगर इसकी जगह आप मैदा या आटा डालते हो तो आपके लिए कुकिंग टाइम क्रिटिकल है. बट अगर आप ओट्स डालते हो, वो भी स्पेशली रोस्टेड ओट्स का फ्लावर बना के डालते हो ना, तो फिर कुकिंग टाइम इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द टेक्सचर इज राइट एंड एवरीथिंग्स कम टुगेदर. इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप लो हीट पे ही बेक करो. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you for joining in. Also, the community cooking, we've got a subscription for community cooking because community cooking is not just one-off, right? आपने कुकी सीख लिया जो कभी बनाएंगे हम, is not the idea. The idea is आपने जो सीखा है वो आप बनाओ. Like at least thrice a month, use what you've learned at some point in time. आपने मेरे साथ सीखा होगा, कहीं और से सीखा होगा. That's absolutely not the point. The point is सीखी हुई चीज को कितना आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो. क्या आपने बाहर से पैटीज लाना बंद कर दिया? क्या आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाके अजीनोमोटो नहीं खा रहे हो? क्या आप बिस्किट्स के पैकेट खोल के आप खुद और फैमिली को नहीं खिला रहे हो? अगर ये सब है तो आपको बिल्कुल सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहिए हमारा. लेकिन अगर इनमें से एक भी चीज आप नहीं कर रहे हो तो आप you're not doing justice to your own self, your own health. So community cooking is a commitment to making good food at home. And when you're not self motivated, like I'm saying, आपको जिम जाना है और आप अकेले नहीं जाना चाहते हो, नहीं जा पाते हो ना, मतलब चल छोड़ो यार, छोड़ देते हैं. But then there's a friend who comes and knocks on your door and says चलो चलते हैं. तो then you get up, कि वो लेने आ जाएगी तो मुझे जाना है. So we've been that friend. We want to come knock on your door 3 times a month and tell you कि चलो कुछ अच्छा बनाते हैं, और let's say no to preservatives, let's say no to chemicals, let's come together and make the change, be the change. Right, someone will have to be this change, right? On all those cigarette and alcohol packets where they write this is injurious to health, I think we should write it on the packaged food as well. That is very injurious to health. That is horrible for we all. We don't realize that, but all the diseases that are coming up, all the immunities that have gone down because of the chemicals that we've been consuming. So we as responsible people, we as people who are interested in food, आप सब जो भी आए हो आज मेरी क्लास के लिए, I am sure that you love food. You love cooking and baking, so why not just do it regularly and why not just commit to it? क्योंकि ना ये everything is about making a habit. दाल रोटी चावल तो नहीं रोज बाहर से मंगाते हैं, बनाते हैं ना, आदत होगी ना हमें बनाने की. हमारा आइडिया हम आपको आदत डाल दें ताकि आप जैसे दाल रोटी चावल घर पे बनाते हो वैसे आप ये सब भी बनाओगे. I think इसका best signal of them being baked is a very strong peanut roasted smell, right? Basically आपको ना 10 मिनट मार्क से आपको खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब वो खुशबू बहुत intense हो जाए, when the fragrance goes really intense, that is when you know this is done, right? Sides हल्की सी कुक लग रही है और top looks beautiful. Ma'am, what is the alternative of our karishma? आप इसको आराम से कढ़ाई में बना सकते हो करिश्मा. These can all be made in the कढ़ाई. See, this is done. Gradually इसका color deepen हो जाए. अभी आपको टच भी नहीं करना, देखना भी नहीं है. Just let them cool down right on the tray. इसको उठा के वायर रैक पे नहीं रखना. ये इतनी सॉफ्ट है because of the oats and because of the peanut butter, they will just collapse. मैम, मैंने पहले जो कुकीज क्लास किया था वो सेम है क्या? ख्याति हो सकता है उनमें से कुछ रिपीटेशन हो. यहाँ पे ना सीखना पर्पस है, बट अल्टीमेट पर्पस है कि उसकी प्रैक्टिस करना और बनाना. तो अगर आपने पहले कुकिंग क्लास कोई सी भी ले रखी, मेरे साथ किसी और के साथ, और आपने वो कुकीज एक बार बनाई थी just to try, and you're not making them for your family yet, you're not making them on a regular basis yet,
I think you must take the class. It's just a ₹79 class. और सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो तो मंथली सब्सक्रिप्शन इज जस्ट ₹129. I mean, these people told me the prices will increase. अभी तक तो नहीं हुआ है increase. People can absolutely buy it for ₹129. 129 में आपको 3 कम्युनिटी क्लासेस मिलेगी. हर महीने 3 बार आएंगे हम. चलो आज कुछ अच्छा बनाते हैं और हम सब आपके साथ मिलके बनाएंगे. Most of the things will be the things that most people will love, and it is like 45% discount. मतलब 1.5 क्लास की कॉस्ट पे 3 क्लासेस मिल जाएंगी. And more than anything else, it's a commitment to health. This is the simplest cookie recipe. Can't wait to make it. Sonal Maida. Absolutely. इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता सोनल. और अगर आप ओट्स घर पे नहीं है लेकिन मैदा पड़ा है तो just try with maida. You will love the result so much. You want to take it the next step. Sorry, late. Please send the videos and send me the recipe. Yes, we will. Yes, we will. तो ये हमारी जो कुकी टूटी थी सी, I made a energy bite out of it. So we never waste things here, and something as good as jaggery, peanut and oats, this combination is not to be wasted. ये देखते हैं guys. 150 is not very hot, right? I can pick it up. You see, right now that's the color, but wait and watch. It will become dark. Can we add seeds as a variation? Oh wow, yes, totally. You can add some seeds on top also and inside also. This dough can take seeds. तो थोड़ी सी छोटे साइज की सीड आप अंदर भी डाल सकते हो और बड़ी सीड आप ऊपर से भी लगा सकते हो. चॉको चिप लगा सकते हो, चॉकलेट चंक लगा सकते हो, स्प्रिंकल्स लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो to make it nice and fancy and make a variation in the flavor. Super class as usual. Thanks a lot, Ani. Sonal. Thank you, Sonal. Thank you everyone for joining in. I'm just keeping it on top of my oven. My oven is very hot, and the residual heat will actually make this a bit sweet. क्योंकि पीनट जब कुक होती है थोड़ी स्वीट हो जाती है, बट वो हाई टेम्परेचर पे जब कुक होती है तो बिटर हो जाती है. तो आई जस्ट कीप इट ऑन द ओवन टिल द टाइम इट cools down. That's my hack, little hack. First question, Swati ma'am, thank you. Thank you. I will come in November or December, ma'am. Would love to meet you. Absolutely, Deepika. We will wait to see you. Thank you so much for Radhika Khatri. When will you share the list of things to be ready for community cooking, Swati ma'am? Swati will share that in a couple of hours from now. अभी आ जाएगी, आज आ जाएगी आपके पास बोले सर. मैम चाय के लिए तो नमकीन भी बाहर से लानी पड़ती है. I love नमक पारे and शक्कर पारे. दीपिका नमक पारे शक्कर पारे घर पे बनाते हो ना? हमने क्लास ले रखी है उसकी. अपन फिर से करेंगे उसकी एक कम्युनिटी कुकिंग क्लास. थैंक यू सो मच रोज. दीपिका अच्छे नहीं बनते लेकिन नमक वाले शक्कर वाले अच्छी नहीं बनते यार. तुम बेकर हो ना यार. तुमने देसी चीजें मुश्किल बनती होंगी. आई नो, आई हैव सीन दिस. जो लोग बहुत अच्छी बेकिंग करते हैं ना उनसे देसी कुकिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है. बट you just stay with us, just stay along, just walk along, right? I have taken the subscription and look forward to all recipes. Okay, thanks Madhura. Thank you Madhura. Thank you. You're new to the community. I think you will have good time with us, and I think we should be able to make a difference in how you people eat. A little difference goes a very long way. अगर हम में से whatever number of people join this, अगर उसमें से कुछ लोग भी even 5% are able to change the way they eat, पैकेट लाना बंद हो जाता है. किसी के घर में एटलीस्ट बिस्किट्स का, फिर कल नमकीन का, फिर परसों you don't want to go out to a Chinese restaurant because you can make better at home. Then I think our battle is won. That is what we are striving for. मैम कुकीज केक्स में हम इसका ड्राई फॉर्म केक ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं क्या? केक में इसका ड्राई फॉर्म ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल कर सकते हो. और इसके क्रम्बल भी बहुत अच्छे बनते हैं. कुछ रेसिपीज में you want to use a crumble, crispy crumble. This comes out really well. सब्सक्रिप्शन हो ही नहीं रहा. ट्राइड कौन है? दीपिका सब्सक्रिप्शन हम करा देंगे तुम्हारा सब्सक्रिप्शन. डोंट वरी. सैंडी ने कॉल नहीं किया था. अच्छा बात नहीं था. अच्छा दीपिका goes to the office also. I think she's in the office right now. So no, you will be able to subscribe. For whoever was not able to subscribe for technical reasons, हम आपको इसी प्राइस में सब्सक्रिप्शन देंगे. Don't worry. That's our fault, then not yours. कुछ एक बैंक्स अलाउ नहीं कर रहे. देखो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सबका हम करवा. Please tell baking of any cookies should be done at the fan or without fan. छाया ही जनरल आंसर नहीं है. कुकी पे डिपेंड करता है. ज्यादातर कुकीज जो कुकीज होती हैं, क्योंकि उनमें मेनली ड्राई आउट करना होता है आपको, तो फैन चल जाता है. बट कुछ एक स्पेसिफिक कुकीज में जहाँ पे टेम्परेचर क्रिटिकल है, जहाँ पे टेक्सचर में सॉफ्टनेस आपको ज्यादा चाहिए, वहां पर फैन को नो कहते हैं.
Most of the cookies, fan is okay, but really depends. And there cannot be a general answer. But most of the time, the English standard English cookie, the chocolate cookie, the butter cookie, the chocolate chip cookie, all of them are okay with the fan. Thanks for the amazing recipe. It helps me to eat after my workout for the sweet cow. Absolutely, absolutely, Kathy. You must try. Indeed. It's a must try. Madhura. Thank you. Madhura, indeed. Thank you everyone. Thank you for joining in. Another fun session, and we've got a lot of baked goods with us and healthy goods this time. Thank you so much. I would wait to see you all for the community cooking class. That's on Friday, and it is something. It's not just about baking cookies. It's about committing to good food. Thank you so much.